Our top story today on 6 p.m. Prime comes from election-bound Uttar Pradesh. This just ahead of Phase 4. UP political showdown is escalating over Samajwadi parties and bomb charge. What is the bomb charge? Prime Minister Narendra Modi targeted the Samajwadi Party 2 days after the verdict, remember, by a special court that sentenced 38 convicts in 2008 Ahmedabad blast case. Prime Minister Modi said these bombs were planted on cycles, which is coincidentally the cycle, an election symbol of the Samajwadi Party as well. Chief Minister of UP, Yogi Adityanath, also targeted Akhilesh Yadav, alleging that there is Samajwadi Party backing the same as backing terror, mafia and Gunda Raj. The Samajwadi Party has been quick to respond, denying all claims by the Bharatiya Janata Party. Akhilesh Yadav, leading the response, has said insulting a cycle is an insult to all Indians. Listen in to how these netas are throwing charges at each other ahead of Phase 4. और ये गुजरात में बम धमाके हुए, कभी आपने सुना नहीं होगा। इस बम धमाके कैसे धमाके किए गए थे? दो प्रकार से किए गए। पहले शहर में एक साथ 50-60 जगह पे धमाके और उसके 2 घंटे के बाद अस्पताल में एक गाड़ी रखी थी, उसमें बड़ा धमाका, ताकि इन लोगों को जब अस्पताल लेके आए, उनके रिश्तेदार आए, अफसर आए, नेता आए, तब वो कार धमाका करे। अस्पताल के अंदर शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा। वहां भी काफी लोग मारे गए। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? मैं क्यों सफाई दूं? जो एजेंसी देश की हैं, उन्हें कम से कम जांच करनी चाहिए, और उन्हें इसलिए भी जांच करनी चाहिए क्योंकि लोकसभा में मैं बैठता हूं। जिस लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और बड़े बड़े मंत्री सब लोग बैठते हैं, उसी लोकसभा में मैं बैठता हूं, तो कम से कम जांच एजेंसियों को करनी चाहिए। और फिर इसलिए है कि जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए आप देखेंगे उनके बयान घटिया आएंगे। और जैसे जैसे नाराज़गी बढ़ेगी जनता के अंदर, बीजेपी को हार सताएगी, आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स बीजेपी के नेताओं के समाजवादी पार्टी के खिलाफ देखेंगे। अपनी जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ और प्रदेश और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करें, लेकिन यह कुकृत्य समाजवादी पार्टी कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी समर्थन का मतलब आतंकवाद को और माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने जैसा है। So how did the Ahmedabad blast case conviction have a reference in election-bound Uttar Pradesh? Prime Minister Narendra Modi said the bombs were planted on cycles. Why did Samajwadi Party pick cycle as the symbol? Immediately getting a response from the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, who said insulting a cycle is insulting India and called it an aircraft of the Aam Aadmi. So here's how the terror angle has now brought a change to the UP war. The Prime Minister's bomb on cycles attack has triggered a political showdown between SP and the BJP in Uttar Pradesh. But very interestingly, jumping into the defense of Akhilesh Yadav was nobody else but Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra. Rushing to his defense, she called the Prime Minister's attack as Fizul ki baat, unnecessary reference, loosely translated. Now, Congress General Secretary backed Akhilesh Yadav and said Prime Minister Modi knows his allegations are not true, but is yet raking all of this up only because of elections in UP. Now, Kejriwal, also the Aam Aadmi Party national convener, has also jumped into this fight. He's slamming the BJP for likening those who ride a bicycle to terrorists. Akhilesh Yadav, meanwhile, put out a social media site reaction on Twitter. He responded to the charge and he shared an image
You'll see this image on your screen. There's a child on a cycle, to which Akhilesh Yadav has then explained insulting the cycle, which is an aircraft of the Aam Aadmi, is an insult to entire India. Now remember, how did cycle become a point of reference? Because cycle is the election symbol of the Samajwadi Party. And these Prime Minister's comments at the Hardoi rally, as Akhilesh Yadav has called it, an insult to all Indians. महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है जब आपकी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है? और ये छुट्टा जानवर की जो समस्या है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने उसको सुलझाया है ना। तो 5 साल से आप सरकार में हैं, तो ये जो आप आज चुनाव के समय कह रहे हैं कि हम गोबर खरीदेंगे जैसे छत्तीसगढ़ में खरीदी जाती है, आज क्यों कह रहे हैं? 5 सालों से क्यों नहीं किया आपने? हवाई अड्डे आज क्यों खुल रहे हैं? आपने PSU क्यों बेचे? उन्हीं से तो रोजगार मिलता है। ये जो तमाम छोटे दुकानदार आपको दिख रहे हैं, ये छोटे जो व्यापारी हैं, इनकी कमर क्यों तोड़ी है आपने अपनी पॉलिसी से? इनका जवाब दीजिए ना। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी, ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं? क्या इसका जवाब देंगे अखिलेश यादव जी कि जिस प्रकार से आतंकी का अब्बूजान उनके साथ पाया गया, उनकी पार्टी में पाया गया, उनकी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करते हुए पाया गया, जिस प्रकार से अबू आजमी एक और मास्टरमाइंड से उसको संरक्षण देने के लिए गए थे अहमदाबाद ब्लास्ट के, तो क्या ये साइकिल चिन्ह वाली पार्टी ने आतंकवाद के साथ और आतंकवाद के लिए संरक्षण देने का काम किया था या नहीं किया था? कल मैंने सुना प्रधानमंत्री जी आके बोले देश में जो साइकिल चलाता है सारे आतंकवादी हैं। मैं जितने साइकिल चलाने वाले हैं भाई साहब, ये गरीबों के ऊपर चोट है। गरीबों को, सारे गरीबों को प्रधानमंत्री जी आतंकवादी बोल रहे हैं। जितने साइकिल चलाते हैं सारे साइकिल चलाने वाले, जब बटन दबाने जाओ तो बता देना बीजेपी वाले आतंकवादी हैं कि साइकिल चलाने वाले आतंकवादी हैं। So what does this mean for ongoing Uttar Pradesh elections? Let's go for a perspective quickly to our National Affairs Editor Rahul Srivastava. Rahul, it started from Dangavadi, Parivarvadi to Chillamjeevi, now Baba Bulldozer, as Akhilesh Yadav has referred to Yogi Adityanath, and now a terror charge directly being brought in by the Bharatiya Janata Party star campaigners against Samajwadi Party. How does this fare politically for both parties in UP ahead of Phase 4? Rahul. Pooja, a bit of political perspective, historical perspective. The cycle being used for terror attacks in 2008 when in Gujarat was not the first time when cycle was used. In fact, it is a ubiquitous kind of an article where people don't suspect it could well be an instrument of terror. And that is why on 23rd of November 2007, there were a series of blasts in Lucknow, Varanasi and Faizabad. 3 in Varanasi, 2 in Faizabad and 1 in Lucknow. There were several bombs which were found unexploded and they were all mounted on bicycles. So it is not just for the first time that cycles were used. It was in 2000 November, it has already happened. The terror operations and terrorist modus operandi keep changing. I have seen in 1989 that in Punjab, the Vespa and the Bajaj scooters and their dickies were the most efficient places where terrorists used to hide explosives. Cycle being a common place, and when you're targeting a common man's area, cycle is something people don't suspect could be carrying explosives. Rahul, so you know what is very interesting is how these political jobs are being thrown so strongly at each other, and Rahul is in Uttar Pradesh tracking all the latest on that. So what exactly happened? Prime Minister Narendra Modi, of course a star campaigner of the BJP, called Samajwadi Party a terror sympathizer and added that the party wanted to even withdraw cases against the terrorists. Here's a report of what exactly happened and how did this become an Uttar Pradesh terrible turn of war. शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। 13-year-old Ahmedabad blasts, which killed 56 people, is now resonating in Uttar Pradesh poll arena. Days after 38 blast convicts were sentenced to death, the BJP has launched a political offensive. ये जो चित्र में आपके सामने मिस्टर
After releasing this old image, which shows Shadab Ahmed, father of a serial blast convict, Mohammad Saif with Akhilesh Yadav. The BJP says Shadab is a SP leader who campaigns for Samajwadi Party in Uttar Pradesh. On Sunday, while campaigning in UP, Modi invoked blasts and took a veiled drive at Samajwadi Party over alleged terror links. यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। ये लोग कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को भी दांव पर लगा देते हैं। The BJP has kept the heat on Akhilesh amid the thick of poll action. समाजवादी पार्टी का शर्मनाक इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी 2013 में जब प्रदेश में सत्ता में थी, तब उन्होंने तमाम आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का प्रयास किया था। आतंकी परिवार का समाजवादी पार्टी का कनेक्शन क्या है? अखिलेश यादव जी की बोलती बंद क्यों है? क्योंकि आतंकियों के अब्बाजान समाजवादी के भाईजान। Facing an all-out attack over alleged terror links, the Samajwadi Party hit back, calling BJP campaign nothing but lies. अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। और ये बात पूछिए आप उनसे कि क्या आप एक गाड़ी में मुझे बैठा करके नीरज शेखर खुद टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग को लेकर के डिफेंस में लेके गए थे? नहीं कि लेके गए थे। देश के बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा लेकर बैंकों के भागे, उनकी तस्वीर किसके साथ है? Uttar Pradesh will see 4 more phases of voting after Sunday's polls. Will the terror link charges resonate with the voters? Bureau Report, India Today. And in UP Phase 4, the most watched seat will be Lakhimpur Kheri, which has, remember, been an eye of the storm and will be voting on Wednesday for Phase 4. The Lakhimpur seat, giving you a background, caught national attention in October last year for a violent clash that claimed eventually 8 lives in total. Union Minister Ajay Mishra Teni's son, Ashish Mishra Teni, who was the prime accused, walked out of jail on bail 5 days ago. Parties are pulling all stops for their campaign ahead of the hotly contested election on 23rd of February. So whether it's Yogi Adityanath of BJP, Asaduddin Owaisi of AIMIM, Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party, all big guns campaigning in the village over 24 hours from now. So what exactly is Lakhimpur Kheri specifically going to be so most watched about? Remember, in October 2021 last year, farmers were mowed down in violence. 8 people in total were killed in violent Lakhimpur clash. Prime accused was Ashish Mishra, the son of the minister, but now out on bail, and of course led to outrage from the opposition parties. 2017 was when the Bharatiya Janata Party had a majority in Lakhimpur Kheri, and of course that meant 7 sitting MLAs were given ticket in the Kheri district, and therefore 5 years on in 2022 the pressure will be on the Bharatiya Janata Party to repeat victory. Will that clash of Lakhimpur Kheri benefit BJP or SP? That remains to be seen. But the key issues on the ground in Lakhimpur Kheri behind the incident that we saw in October 2021. Establishment of Sugarcane Research Institute. Timely payment to sugarcane farmers is an on-ground concern. Demand for a plan against floods and erosion. Improvement of rural infrastructure, which is largely the Lakhimpur Kheri area. So that, beyond politics, remain the ground situation of improvement of rural infrastructure. Welcome back. It is election season and all the big news makers speak only to India Today. And now on 6 p.m. prime, ahead of the crucial Phase 4, 2 union ministers, SP Baghel and Anupriya Patel, speaking exclusively. Listen in to what these netas have to say.
करहल की फाइट तो हमने देखी थी, कैसा रहा वहाँ पे मामला, क्योंकि आप तो लगे हुए थे? निश्चित तौर से वहाँ का किला फतेह करके अब हम लोग अगले चौथे राउंड की ओर अग्रसर हो गए हैं। हार के लक्षण इसी बात पे हैं कि नॉमिनेशन के समय अखिलेश जी ने कहा था कि वो आएंगे नहीं, तो 5 दिन में वहाँ कार्यकर्ता ने ऐसा माहौल बना दिया जनता ने कि उनको छठवें दिन आना पड़ा। इसके बाद सोचा था कि बस एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी, फिर 6 से लेकर 15 तक ऐसा माहौल बना कि 17 को उन्हें पुनः आना पड़ा। अब एक प्रतिष्ठित चैनल में है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो किस विधानसभा में 2 बार गए और उन्होंने अपने लिए पिक एंड चूज किया करहल, इसका मतलब उनकी दृष्टि से वो सर्वश्रेष्ठ है और आंकड़े बताते भी हैं कि वहाँ सपा जीती है। तो 2 बार गए, ऊपर से नेताजी को भी लाना पड़ा। फिर कहा था कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो श्री राम गोपाल यादव वहीं रहे, धर्मेंद्र यादव जी, अक्षय यादव, बड़े नाम याद करने पड़ते हैं उनके यहाँ, डिम्पल यादव, तेज प्रताप सिंह, ये सब पूर्व सांसदों के नाम में ले रहा हूँ। उनको 20 दिन वहाँ ही रहना पड़ा। इस बात का ये प्रतीक है कि वो हार रहे, क्योंकि लीड बढ़ाने के लिए नेताजी की आवश्यकता नहीं थी। वो अकेले एक ऐसे बेटे हैं, बुढ़ापे में बेटा बाप की लाठी का सहारा होता है, उनको जवानी में अपने पिताजी के सहारा लेने की आवश्यकता हुई। लेकिन चाचा भतीजा दोनों दावा कल ये कर रहे थे कि 1 लाख के पार मार्जिन होने वाला है, आपकी जमानत भी नहीं बचेगी, बार बार ये बात कही है। चलिए, मैं एक कठोर बयान देने जा रहा हूँ, अब हार जीत की बात छोड़ दीजिएगा। चलिए थोड़े, उन्होंने क्या कहा, मेरी जमानत नहीं बचेगी। अगर ये बात उनकी सही निकल आए तो वो थूकेंगे और मैं चाटूंगा, और अगर हम बचा ले गए, बचाना नहीं जीतना ही है, अब जमानत पे ही बात हो रही, तो मैं थूकूंगा और अखिलेश यादव को चाटना पड़ेगा, फिर थूक चटुअल कहलाएंगे वो, थूक चट्टा। लेकिन इस बात को दिखाना गुरु पार्टनर जरूर 10 तारीख को। बड़ी बात कह रहे हैं आप? ज्यादा बड़ी बात कह रहा हूँ, वो बड़ी बात कहने से कोई डरता थोड़ा, कॉन्फिडेंस। उन्होंने क्या कहा, मेरी जमानत नहीं बचेगी। अब हार जीत छोड़िएगा सारी बातें, अगर जमानत बचा ले गया तो मैं थूकूंगा और उसको चाटना पड़ेगा, वरना वो थूकेंगे मैं चाटूंगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस बार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है आतंकवाद को लेकर के। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी के तार जुड़े हुए हैं, उनका जो बेटा जो एक्यूज था उसके पिता के तार जुड़े, उसको आप कैसे देखें? कोई नई बात थोड़े हुई है, तार इसलिए जुड़े हैं कि जब अयोध्या जी पे हमला हुआ और जो लोग पकड़े गए, सरकार आने पर मुकदमे वापसी का निर्णय लिया गया, वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। हमने ये देखा है कि राजनीतिक कारणों से जो मुकदमे विपक्ष में कायम होते हैं, जैसे बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, नहर में पानी नहीं आ रहा, उस पर लोग धरना रैली प्रदर्शन करते हैं, वो एक राजनीतिक मुकदमे होते हैं। और इसमें एक शब्द लिखा होता है, मैं पुलिस में रहा हूँ, सीआरपीसी को पढ़ा है, जनहित में ये मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। तो जो हमारे आराध्य है, हमारी जो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म का प्रतीक अयोध्या जी हैं, उस पर जो बम फेंक रहे हैं या वहाँ हत्या करने के लिए आए वो पकड़े जा रहे हैं, उन आतंकवादियों के मुकदमे की पहल शुरू हो चुकी थी। तो मेरे लिए कोई ये नई बात नहीं है कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जो पकड़ा गया, उनके पिताजी अब्बा जान के अखिलेश यादव के साथ फोटो हैं, और वो कोई फोटो किसी दावत वलीमा का नहीं है, वो इंडिविजुअल एक फोटो है। इसका मतलब उसने समय लिया था, वो मिला था और फोटो खींची। मेरे बहुत से फोटो होते हैं 1000 की भीड़ में, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये सीट चूंकि यहाँ से खुद डिप्टी सीएम चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने आपकी बहन को उतारा है, तो कहा यह जा रहा है कि जो आपकी बिरादरी है, खास करके कुर्मी बिरादरी और बीजेपी यहाँ पर बिल्कुल बटे बटे से, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को मेरी बहन ने स्वीकार करके उनके सिंबल पे चुनाव लड़ना उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल के विचारधारा को मानने वालों को ये बात गले नहीं उतरेगी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की पार्टी उनके पार्टी के नाम के साथ, उनके पार्टी के सिंबल के साथ ही राज्य और देश के सदन में पहुंची है, और उन्हें ये कतई गवारा नहीं था कि उनकी अपना कोई पार्टी का प्रत्याशी, यहाँ तक कि हम सब उनकी संतान हैं, उनके विचारों को लेकर आगे चल रहे हैं, किसी दूसरी पार्टी से हम पहचान उधार लेकर जाएं, ये उन्हें कभी गवारा नहीं हो सकता। लेकिन विरासत, इसका मतलब पूरी विरासत अब आपके पास है, आप यही कह रही हैं? 12-13 सालों का मेरा संघर्ष आम जनता के बीच में है, जनता मेरे साथ है, और बाकी तो चुनाव के परिणाम भी बता देंगे। लेकिन आपको लगता नहीं है कि बहन के खिलाफ प्रचार करने में आपको थोड़ी हिचक हो, आपको थोड़ा मलाल हो, या फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं किसी के खिलाफ प्रचार करने के लिए नहीं आई हूँ।
मैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा के लिए हमेशा लड़ती रही हूँ। मेरा संघर्ष सड़क से सदन तक मेरी जनता ने देखा है, अपना दल के चाहने वालों ने देखा है। एनडीए गठबंधन की मैं सहयोगी हूँ और मैं गठबंधन की मजबूती के लिए यहाँ पर आई हूँ। जिस तरीके से तीसरे चरण के बाद नया मुद्दा उठ करके आया है कि आतंकवाद, और खासकर जिस तरीके से अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद बीजेपी इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी से जोड़ रही है कि एक आतंकी के पिता की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ है और जो लोग पकड़े गए वो कहीं ना कहीं उनके साथ हैं, उन्हें उनके रिहाई की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की, ऐसा आरोप लगाया है। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में पहले भी कई बार बनी है और समाजवादी पार्टी के लोगों के चाल चरित्र और चेहरा इसको उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। रोज हम पन्ने पलटेंगे तो कोई ना कोई उदाहरण हमारी आंखों के सामने आएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी अराजकता के जिस चरम पर उत्तर प्रदेश को लेकर जाती है उससे कोई भी अपरिचित नहीं है। Let's now take you to the northeastern state of Manipur, which is set for election on 28th of February in the first phase. But the last few days of campaigning, while has seen a number of top netas coming to the hill state and campaigning is in full gear. Congress leader Rahul Gandhi, to begin with, held a public meeting in Imphal. But Prime Minister Narendra Modi, meanwhile, will be campaigning tomorrow in the election-bound state of Manipur. The Congress party, interestingly, has concentrated on small gatherings, Jan Sabhas in constituency so far in its campaign. The BJP will be and already has sent a slew of heavyweights, including party president JP Nadda, Minister Smriti Irani, Kiran Rijiju, Sarbananda Sonowal, Himanta Biswa Sarma and many others. Now the Bharatiya Janata Party and the National People's Party, meanwhile, in Manipur, hit out at each other, blaming each other parties for the pre-election violence that is taking place in the state of Manipur, and that in specifically some districts of the election-bound state. So what happened in Manipur with regard to the pre-poll violence? And that happened in 10 constituencies. It started from 19th February. There was a major clash in the Andhro village that was shut down, and a shutdown that was called by the insurgent groups. February 22 was, remember, is when Prime Minister Modi is expected to visit. Shutdown already has been called by some of the banned armed groups on it. Drugs and arms smuggling is currently rampant, and regular raids are being done in Manipur to seize the illegal liquor. So a lot has been happening in the state of Manipur as elections are due or in just about the next 1 week in the state. But one aspect that Manipur is not away with and aloof of is candidates with criminal records of money and muscle power. Let's bring you what exactly do we have. 52 out of 265 candidates have criminal history. 12 BJP candidates have criminal charges against them. 8 Congress candidates also have a criminal history background. 4 NPP candidates are also with a background that can be related to crimes. 7 Janata Dal United candidates also have criminal history. All of them together in this for the Hill State. Anisha Mathur is in Imphal. Let's bring you a ground update. Anisha, because you've been tracking the pre-poll alliance, talking to senior police officials as well. What is the current situation on the ground? Tell us about all the big heavyweights, and what do people on the ground in Manipur want with regard to these elections? Well, Pooja, the basic issue that is being fought on is development. The BJP, of course, is touting their 5 years of peace in Manipur. We've seen a cessation of hostilities. The state has seen a lot peace after a very long time as the talks are still going on. But there are rumblings of disquiet. We've got an underground group, a band organization, Corcom, which is called for a bandh tomorrow to protest against the Prime Minister's visit. We've got the regional parties, which are the Naga People's Front, the Naga People's Front and the Kuki parties that have come up, which are raising concerns with regard to the tribal issues. And most important issues, according to these regional parties, would be the ADC, that is the Autonomous District Councils, the Hill Area Councils, and the AFSPA repeal, which is something that the BJP has said are not issues that will be that are of concern at this moment, but these are areas of concern
for the central government to tackle. Rahul Gandhi, of course, was here today. Prime Minister is expected tomorrow. Yes. Home Minister Amit Shah is expected on the 23rd. And a lot of heavyweights are coming in. Rahul Gandhi, of course, attacking the BJP for trying to Anisha, run a yes, government, so that is my from added the question centre also, for which I would want you to explain, is that Manipur is a conflict state. AFSPA is also a part of discussions ongoing, and election manifestos are not really mentioning it in detail. What are then the politicians in Manipur promising to the people, to the residents of the state of Manipur? Well, if you look at the manifestos, the BJP, of course, has kept AFPA and ADC off the table. But it is, in fact, a part of the manifestos of all other parties, including the Congress, the NPP, NPF, and other parties. The issue of development, of course, is the biggest point. There are very few jobs in Manipur. Young people in particular say that if you want higher education or you want jobs, you have to go out of Manipur, you have to go to other states for higher education as well as jobs. The job creation, of course, is the biggest election issue here. There is also the question of infrastructure, because outside of Imphal city, the roads infrastructure is quite poor. While there has been some work, there is still need. Very important. So Anisha Mathur is on the ground, and she's been getting us all the latest, the ground voices and the Netas campaigning there in Manipur, and we'll continue to update on the same as well. Anisha, thank you so much for this update coming in from Imphal in Manipur.